सब ठीक होंगे। थोड़ा सा रिसर्च टाइम है, मैंने सोचा कि रिसर्च इसमें कर ली जाए। लॉ साइट पे जाके कुछ चीज़ें थी, कुछ किताबें वगैरह भी लेके आया था जिसके रेफरेंसेस मिले थे लॉ साइट में। कोई एक आधा जो है वो केस लॉ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता जब आपको टाइम जब भी मिले, तो माइट इज़ वेल जस्ट डू दैट इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान लॉ साइट। लॉ साइट उर्दू में भी होती है, इधर ऑप्शन आ रही है उर्दू की। There's no particular judgment in mind today, only the fact that whatever comes in the latest judgments form, we're going to read that in summary form. Law site में login में issue आ रहा है. Let's go to the Supreme Court website. ये कोरोना के मैसेज आता है, the latest judgment form. देखते हैं काजी फईसा वाली भी आई है कि नहीं आई। अच्छा, सर्विस कंपल्सरी रिटायरमेंट की जजमेंट आ चुकी है। दिस इज डेट है 22/2/2021 की, और जैसे हमजा मिस जस्टिस गुजार अहमद, केस टाइटल सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस नूरुल अमीन। केस नंबर है, दिस सर्विस कंपल्सरी रिटायरमेंट है, दूसरी भी सर्विस की है, ग्रांट ऑफ बैक। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद शरीफ वर्सेस आईजी पुलिस जस्टिस सैयद मंसूर शाह साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी जजमेंट्स होती हैं। ये जब हाई कोर्ट में हमारे चीफ थे तब भी इनकी जजमेंट्स होती, नो डाउट बड़ी मेहनत करते थे इनके कोर्ट में अपने केसेस लगवाने के लिए, जो सीनियर्स भी बताते हैं। ये टैगलाइन प्रिंसिपल रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बैक बेनिफिट सर्विस लॉ। बैक बेनिफिट्स जो होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपको उस टाइम के लिए कोई चीज़ करते हैं और आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, एक शोल्डर प्रमोशन के टाइम पे या आपको एक बिगर पोस्टिंग के टाइम पे, तो वो आपको बैक बेनिफिट्स लेने के लिए आते हैं। ये जैसे काजी मोहम्मद अमीन अहमद की नाम भी फुल अरेस्ट, लेट्स सी, इसमें से 28/4/2021 थिंक ये वाला थोड़ा सा बीच में देख लेते हैं। लॉ साइट पे लगता है मेरे फ़ोन में लॉग्ड इन है, तभी यहाँ पे नहीं हो रही। एनीवेज, ये बड़ा मेरी जो रीसेंट वीडियो थी वो बड़ी ओवरनाइट उसको आप समझ सकते हैं 6 टाइम्स ज़्यादा व्यूज़ मिले। दैट वाज रिलेटेड टू द जस्टिस काजी फैज़ ईसा जजमेंट। नो नो नो, काजी फैज़ ईसा वाली नहीं, वो हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट में अभी जो ये डीएचए वाला केस था उसके कमेंट्स पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद बड़े जो है वहाँ पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से आप लेके चलते हैं चीज़ों को, या जो आपकी इनफैक्ट वो चीज़ें होती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, वो लोगों को बड़ी फैसिनेट नहीं करती हैं। जो ज़रा स्पाइस्ड अप होती हैं वो ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। आई डोंट नो व्हाई, फॉर हिडन रीजंस ये होता है, जो कि होना नहीं चाहिए और कम्प्लीटली जो है ये डिसक्रेडिट होना चाहिए। एनीवेज, ये लेट्स गो टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मंसूर अहमद मलिक साहब ये रिटायर हुए हैं कल। जस्टिस सैयद मंसूर शाह साहब हैं, दोनों चीफ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के भी। एपिलेट जुरिस्डिक्शन में है। सीपी नंबर इन्होंने इसको साथ में क्लब किया अगेंस्ट 17 अगेंस्ट द जजमेंट ऑर्डर ऑफ पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल लाहौर। पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल की जो होती हैं, आपको पता है कि जो
इसके तमाम मामला होते हैं वो चैलेंज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मोहम्मद शरीफ है जी, चीफ CTO लाहौर एंड 2 अदर्स, वैसे NIG पंजाब एक्सेट्रा। पिटिशनर्स हैं मोहम्मद शरीफ है, चीफ CTO है लाहौर का, 2 अदर्स IG वर्सेस IG पंजाब पुलिस लाहौर, रकिया खुर्शीद इन CP नंबर 10, ठीक है। मुजफ्फर नसरुल्ला चट्ठा, फिर द पिटिशनर्स खान मोहम्मद बेनीवाल, मिस्टर महमूद अहमद काजी। अच्छा, काजी साहब ने इसमें ASC ये सर्विस के बड़े यू कैन से अच्छे वकील हैं। महमूद अहमद काजी साहब, रिसर्च असिस्टेंट इसमें हैं हसन रियाज, रिसर्च ऑफिसर सिविल जज SC RC इस्लामाबाद में। डेट ऑफ हियरिंग 11/2/2021। जजमेंट थी से मंसूरी शाह साहब की। कंसिडर इन दीज पिटिशन द स्कोप ऑफ entitlement of a civil servant to back benefits on his reinstatement in service after his wrongful removal of or dismissal has been set aside, or on his being restored to his post after the penalty imposed on him has been set aside. We also consider the treatment of the period spent by a civil servant away from duty due to dismissal from service or absence from duty, and the purpose of meaning of the terms leave without pay or leave of the kind due granted to a civil servant. Brief facts of the petitions. In CP, in petitioner Muhammad Sharif, sub-inspector in Punjab Police, was compulsorily retired from service by the departmental authority. He preferred a departmental appeal and on expiry of the period stipulated for its decision, moved an appeal before the Punjab Service Tribunal. The tribunal reinstated him in service through the period since, though the period since the onset compulsory time until reinstatement in service was directed to be treated as leave without pay. He now prays that his intervening period be treated with pay. The department has also called in question the order of reinstatement of Muhammad Sharif in CP. This is मतलब ये उसने कहा जी आपने मुझे जो वहाँ से कंपल्सरी रिटायर किया था, बाद में जो ट्राइब्यूनल ने उनको रीइंस्टेट कर दिया सर्विस में। अब वो जो पीरियड था जब वो रीइंस्टेट और जब वो अपनी सर्विस में नहीं थे, उसकी जो पेज हैं वो कह रहे हैं मुझे वो विद पे दें। डिपार्टमेंट ने उसको चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसने चैलेंज किया हुआ पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल की जो ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया, इन्होंने साहब ने अपना भी चैलेंज किया, वो दोनों को साथ सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। इन CP 109 थी। द रिस्पोंडेंट रुकैया खुर्शीद, लेडी ट्रैफिक वार्डन हैज़ Khurshid, lady traffic officer, was dismissed from service by the Chief Traffic Officer Lahore. The appellate authority, taking lenient view, reinstated her in service, but the period spent away from duty was treated as leave without pay, and the tribunal accepted her appeal, and the period during which she remained out of service was adjudged to be considered as leave of kind due. The department now pays the tribunal's interference with the department proceedings to be overturned. ठीक है, डिपार्टमेंट की अपील आई हुई है एक और औरत के अगेंस्ट जो ट्रैफिक वार्डन थी, लेडी ट्रैफिक वार्डन इन CP 1 to the ठीक है। रिस्पोंडेंट रियासत अली जो है इसमें कांस्टेबल was dismissed from service by department authority. The appellate authority, taking a lenient view, reinstated him in service. Nevertheless, minor penalty of censure was imposed, and the period between dismissal and reinstatement was directed to be treated as leave without pay. The tribunal accepted the civil servant's appeal and held that the period during which the civil servant's appeal and held the period during which was kept away from duty be treated as leave of kind due. The penalty of censure was, however, maintained. The department now prays that the order of the tribunal be reversed. In CP, the respondent, Dr. Muzaffar Nasrullah Chattha, consultant orthopedic surgeon, was awarded major penalty of forfeiture of 2 years of service for absence, which was reduced to forfeiture of 1 year in departmental appeal. The period of absence was to be treated as extraordinary leave without pay. The tribunal accepted his appeal and decided that the period of absence be treated as earned leave. The petitioner have sought leave of this court under Article 212/3 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan Constitution to appeal against the
decision of the tribunal. Back benefits, ठीक है. As the very outset, it is important to underline that the term back benefits has not been mentioned in the service laws of Punjab or Pakistan. However, the term has a wide usage in the subcontinental jurisprudence, um, including hours including hours for a long time. According to Black Law's dictionary, back pay in the salary that an employee should have received but did not receive because of an employer unlawful action. Back pay award is a judicial decision that an employee or ex-employee is entitled to an accrued but uncollected salary or benefit. The purpose of back pay award is to make the employee whole, therefore restore the economic status quo that would have been obtained but for the wrongdoing of the part of the employer. Back benefits is a compensation for tangible economic loss resulting from an unlawful employment practice. Back pay largely translates into pay benefits as under our jurisprudence. Back benefits are therefore retroactive payments, even though the term back benefits is wider than back pay as it includes other benefits, but for the purpose of this case we restrict the meaning of back benefits to areas of pay or payback. मतलब वो कह रहे हैं कि मंसूर शाह साहब कह रहे हैं कि बैक बेनिफिट जो हैं ये बैक पे से ब्लैक लॉ डिक्शनरी से उन्होंने उठाया है. इसकी डेफिनेशन कहा है कि ब्लैक लॉ डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको जो है वो बैक बेनिफिट्स जो हैं ये बैक पे से भी ज़्यादा वाइड होते हैं. मतलब जिसमें पेट्रोल सर्विसेज होती हैं, देन यू ऑल्सो हैव द योर कार, योर ड्राइवर, ऑल ऑफ द अदर फैसिलिटीज़ दैट यू अर्न विद द गवर्नमेंट जॉब, वो सारी आपको मिलनी चाहिए. बट यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ इन फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म, पे की फॉर्म में. पैराग्राफ नंबर 8 में कहते हैं रीइंस्टेट सर्विस मीन्स टू प्लेस अगेन in former state or position from which the person has been removed. Reinstatement is effected from the date of dismissal with pay, back pay from the date. A reinstated employee is to be treated as if he had not been dismissed and is therefore entitled to recovery of benefits such as that he has lost during this period of employment. However, pay in lieu, ये जब बहुत इंपॉर्टेंट है perhaps. एक तो बैक बेनिफिट्स की फॉर्म में सिविल सर्विस जो सर्विस लॉ करते हैं या देखते हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए बैक बेनिफिट्स की डेफिनेशन दी हुई है वहाँ पे ऊपर, और रीइंस्टेटमेंट की डेफिनेशन नीचे दे दी है. A reinstatement employee is to be treated as if he had been not been dismissed and therefore entitled to recover any benefits that he has lost during his period. However, pay in lieu of notice ex gratia payment by the employer and supplementary benefits and other sums has been received because of his dismissal or any subsequent employment will be taken into account. An employee, ये रिकमेंडेशन लगा दी है कि किस फॉर्म में जो है ये रीइंस्टेटमेंट नहीं होती. उसके बाद एम्प्लॉई की डेफिनेशन, देयरफॉर सिविल सर्वेंट in this case whose wrongful dismissal or removal has been set aside goes back to his service as if he were never dismissed or removed from service. The restitution of employee in this context mean that there has been no discontinuance of his service and for all purpose he has never left his post. He is therefore entitled to arrears of pay for the period he was kept out of service for no fault of his own. No different is the position when an employee has been served with penalty like reduction in rank or withholding of increment or forfeiture of service. The penalty has been set aside. The employee stands restored to his post with all his direct perks and benefits intact and will be entitled to arrears or to pays as would have accrued to him had the penalty been imposed. The general principle of restitution fully means the constitutional requirement of fair trial and due process. Article 4 and 10A, besides the right of life, Article 9, which includes a right to livelihood, ensuring all lawful economic benefits that come with. अच्छा उस पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी लगा दिया कि राइट टू लाइफ भी इससे कर्व होता है, क्योंकि आप देखें कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर रीच कर देती हैं सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो कोर्ट्स हैं कि इसमें जो है बैक बेनिफिट्स के मामले में उन्होंने राइट टू लाइफ लगा दी है, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट. इससे जो है आप अपने क्लाइंट्स के लिए काफ़ी अच्छी मदद ले सकते हैं कि राइट टू लाइफ आप बीच में ले आते हैं तो काफ़ी जो है वाइडर सेंस में यूज़ कर देती है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जस्टिस मंसूर शाह साहब. बेनिफिट्स एंड कम विद अच्छा रीइंस्टेटिंग एन एम्प्लॉई बट not allowing him to enjoy the same terms and conditions of service as colleagues is also discriminatory. All this snowballs into offending the right to dignity. Article 4. wow. काजी साहब आगे हैं इसमें. आर्टिकल 25 उन्होंने लगवा लिया, आर्टिकल 14 भी बीच में रीइंस्टेट करा दिया. ऑल दिस स्नोबॉल्स इनटू ऑफेंडिंग द राइट ऑफ डिग्निटी भी इससे होती है, जो कि इनफैक्ट होती है इफ़ यू टेक इनटू वाइडर सेंस कि आपने
जो है वो डिग्निटी आपकी सेक्रीफाई होती है। अब 2 साल के लिए आप बीच में रीइंस्टेट हो गए हैं, मगर आपको जो पे आपको मिलनी चाहिए थी दैट इज़ नॉट लीगली बीन गिवन, कि उस जो 2 साल आपने ज़ाया किए हैं वो आपके इकोनॉमिकली सारे ज़ाया हो चुके हैं, बाद में अब रीइंस्टेट होते हैं। रीइंस्टेटमेंट का मतलब वो ये बताता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कि फ्रॉम द डेट ऑफ योर एक्सपल्शन या द रॉन्ग डूइंग, उस दिन से लेके बाद में जब आपने किया तो आपकी जिस दिन से आप जो है वो डिपोज हुए हैं या डी पोस्ट हुए हैं, उसी दिन से आपकी वापस पोस्टिंग कंसिडर की जाएगी। और उसकी रीइंस्टेटमेंट का मतलब ये बताया हुआ है, एम्प्लॉय विल बीइंग ट्रीटेड एज लेसर एम्प्लॉय इन स्पाइट बीइंग reinstated to restore into service. The concept of reinstatement to service with original seniority and back benefits is based on the established principle of jurisprudence that if an illegal action wrong is struck down by the court, as a consequence, it is also to be ensured that no undue harm is caused by to any individual due to such illegality, wrongs, or as a result of delay in the redress of his grievance. It is by virtue of a declaration given by the court. A civil servant is to be treated as being still in service. He should also be given inconsequential relief and back benefits, including salary by the period he was kept out of service if he were actually performing duties. A civil servant once exonerated from charges would stand restored in service if he were never out of this. मैं साथ में इसके नोट्स भी ले लेता हूँ, क्योंकि जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पेशली सर्विस देखते हैं, जैसे मैं भी सर्विस में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, उसमें काफ़ी इन्होंने चीज़ें बता दी हैं बीच में, जो जो हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं, इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, मगर जो सुप्रीम कोर्ट से दे अटर दोज वर्ड्स, दोज हैव यू नो प्रैक्टिकल इम्प्लिकलिटीज़ होती हैं, उसकी जो हमारा इम्पैक्ट होता है हम सबके ऊपर, वो बड़ा एक वाइड इफेक्टेड होता है। पूरे जो है उसको पाकिस्तान देखता है या पूरा कंट्री नेशन वाइड उसका इफेक्ट आता है, तो दोज हैव ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हो जाता है। ये मैंने ये हमने जो स्केड्यूल बनाया हुआ था ये वो भी आता है अभी, और इसमें हम लोग इसको डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ। ये क्रिमिनल लॉ की यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, वो स्केड्यूल वाले को रहने देते हैं। दिस इज सर्विस लॉ, दिस इज रिलेटेड टू बैक बेनिफिट्स। इसकी जो वर्किंग देख लेते हैं। अभी ऑब्वियसली ये रिपोर्ट उस तरीके से नहीं हुआ, तो इसमें हम लोग इसका सीपी नंबर लिख लेते हैं, केस नंबर जो होता है CP 517L। दो 2016 का ये चल रहा था। ऑब्वियसली अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बैक बेनिफिट्स वो बताते हैं कि डेफिनेशन फ्रॉम ब्लैक लॉ as if the employee never left service। फिर सेम वे में इधर ये बताता है reinstatement
इसमें बैक बेनिफिट्स भी बता दिया इन्होंने, मैं इसी के अंदर मार्क कर लेता हूँ। रीइंस्टेटमेंट भी बीच में बता देते हैं, ठीक है। दिस इज़ बड़ी मज़े की चीज़ मिल गई है। मंसूर शाह साहब की इसमें जजमेंट है। मलिक मंजूर वो कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंस्टेटमेंट टू सर्विस विद ओरिजिनल सीनियरिटी एंड बैक बेनिफिट्स is based on established principle of jurisprudence that if any legal action wrong is struck down by the court, as a consequence, it is also be ensured that no undue harm is caused by any individual due to such illegality slash wrong or so as a result of delay in the redress of his grievance. If by virtue of declaration given by the court a civil servant is to be treated as being still in service, he should also be given the consequential relief of the back benefit including salary for the period he was kept out of service as if he were actually performing duties. ठीक है. A civil servant was once exonerated from charges would stand restored in service if he never out of it and would be entitled to back benefits. A five-member bench of the Supreme Court of this court is in IG Police versus Tariq Mahmood authoritatively reiterated the grant of back benefits to an employee who was reinstated by a court, tribunal, or the department is a rule, and denial of such benefit is an exception on the proof of that. अच्छा इस दोबारा पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. The grant of back benefits to an employee who was reinstated by a court, tribunal, or the department is a rule, and denial of such benefit is an exception on the proof of that such a person had remained gainfully employed during such a period. अच्छा जी, ये बीच में ये तो काफ़ी मज़े की चीज़ बता रहा है आपको. ये बता रहा है जो बैक बेनिफिट्स हैं ये भी जजमेंट नोट करने वाली है. इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. ये जो है ये भी सर्विस लॉ में आता है. सर्विस लॉ इसकी सेटिंग हो जाएगी. इसका बैक IG वर्सेस तारिक महमूद. SC का है ये. ठीक है जी. ये वो बताता है कि जब तक आपने करना है. अच्छा, इट फॉलोज उन्होंने रीट्रेट किया सुप्रीम कोर्ट की पहले भी जजमेंट है उसको री-एस्टैब्लिश किया हुआ है. इट फॉलोज दैट वेयर द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक इज set aside unconditionally, back benefits are to be paid necessarily. The grant of back benefits to an employee who has been illegally kept away from his employment is a rule, and denial of service benefits to such reinstated employee is an exception. When a civil servant is reinstated into service and his dismissal from service is held to be illegal and for no fault of his own, then his reinstatement in service would mean that he has always been in service, and as a consequence be paid salary from the day he was illegally removed or dismissed from service. वही वाली बात जो पहले हमने डिस्कस की. The principle of restitution and payment of back benefits also finds its presence under the second proviso to section 16 of Punjab Civil Servants Act. हमने पढ़ा हुआ है, which deals with back benefits in the shape of arrears of pay in the event that the order of dismissal or removal or reduction in rank is set aside in the following manner, provided that where a civil servant has been dismissed or removed from service or reduced in rank, he shall, in the event of the order of dismissal, removal, reduction in rank being set aside, कि अगर वो जो order जिससे वो illegally remove हुआ था वो set aside हो गया, be entitled to such arrears of pay as the authority setting aside the order may determine.
In past, the concept of arrears of pay was dealt with Fundamental Rule 54 of Service Rule Punjab 7. CSR issued by federal government and the Punjab government respectively. Said rules provide as follows: where a government servant has been dismissed or removed, is reinstated, the revising or appellate authority may grant to him for a period of his absence from duty, if he is honorably acquitted, the full pay to which he would have been entitled and not been able to dismiss it. ठीक है, ये उसको वापस कर देना. वो कहते हैं FR 54 का, where a government servant has been dismissed or removed is reinstated, the revising or appellate authority may grant to him the period of his absence from duty, if he is honorably acquitted, duty, the full pay to which he would have been entitled if he had been not been dismissed or removed by the order to is recorded, if otherwise such portion of such pay as the revising authority may prescribe. ठीक है, ये उन्होंने बता दिया. फिर प्रोवाइजो का CSR 7.3 भी है, where the government servant who was dismissed or removed from service is reinstated. Reinstated, the revising or appellate authority may grant to him for the period of his absence from duty, if he is honorably acquitted, the full pay to which he would have been entitled if he had not been dismissed or removed by such order. ये रूल, इसका नोट भी है आगे. एडमिनिस्ट्रेशन FR and CSR predate the constitution and the act after promulgation of the constitution in 19. FR and CSR were given protection under article 241 of the constitution, albeit subject to this consistency with the constitution till act. FR and CSR, इसको भी नोट लेना चाहिए. Fundamental rule CSR. हाँ, ये वाला भी हो गया. अच्छा, coming back to the second proviso, section 16 of the act, an important section discretion to be exercised by the authority or court in granting arrears of pay after the orders of the wisdom handed down by the reinstatement of restoration of an employment to the of the employee to the post may be due to the following different reasons: purely on merit, on technical ground, without touching the actual merit. An employee on reinstatement on merit cannot be deprived back benefits. ठीक है, ये भी हो गया. अब इसको हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया. ये बाकी उन्होंने इंडिविजुअली तमाम जो CPs हैं उनको उन्होंने बीच में लगाया हुआ है. The respondent was reinstated on compassionate grounds by the appellate departmental authority, yet no responsibility was fixed on her, and the tribunal ordered that the period of her absence be treated as leave of the kind due, as the appellate authority accepted her explanation and did not impose any penalty on her. She could not be refused back benefit unless she removed gainfully employed during the period spent away from duty, which is not the case here. Therefore, the CP 1019L of 2016 disposed of in terms that the intervening period between dismissal and reinstatement be considered as if the respondent were on duty. अच्छा, इसको भी उन्होंने दे दिया बैक बेनिफिट, इसीलिए कि उन्होंने कहा जी अगर आपने बीच में सिर्फ कंडीशन एक है कि अगर बीच में क्यों और आपने काम करके पैसे कमाए नहीं कमाए तो आपको वापस देना है बैक बेनिफिट. उन्होंने ये वाली CP में भी दे दिया. ये भी जो है देखते हैं. CP में उन्होंने कहा था रिस्पोंडेंट वर रीइंस्टेटेड बाय द अपीलेट डिपार्टमेंट. अच्छा, ये बताने वाली बात है, शुरू में उन्होंने जनरल रीजंस एक जनरल आउटले दे दिया, फिर उन्होंने इंडिविजुअल पैराग्राफ में इंडिविजुअल CPs को उन्होंने साथ में डिसाइड किया. अब इसमें देखते हैं रिस्पोंडेंट वर रीइंस्टेटेड बाय द अपीलेट डिपार्टमेंट अथॉरिटी दो माइनर पेनल्टी ऑफ सेंसर वाज अवॉर्डेड to him which was maintained by the tribunal. The absence which was treated as leave without pay was converted into tribunal into leave of the kind due. It is true that respondent was not exonerated of his guilt, only the penalty was reduced. The tribunal, while affirming the penalty of censure, failed to discuss the question of arrears of pay that would have become due
to the respondent under the second proviso to section 16 of the act. In the peculiar facts and circumstances of this case, we do not find it appropriate to demand the matter to the tribunal at this late stage, and therefore, considering the nature of the penalty of censure, we dispose CPN in terms that the intervening period between dismissal and reinstatement be considered as it if the respondent was on duty. यहाँ पे भी उसको दे दिया, अगली में भी दे दिया होगा. चलो लास्ट में ही देख लेते हैं. 13 नंबर है जजमेंट. इन CP 1 द रिस्पोंडेंट वाज अवॉर्डेड मेजर पेनल्टी और forfeiture of 2 years of service from for absence, which was reduced to forfeiture of 1 year. Department of Appeal, the period of absence was to be treated as extraordinary leave without pay. The tribunal accepted his appeal and declared that the period of absence be treated as earned leave. The absence of the respondent refers to the period for which he had sought leave on medical ground, though his request remained undecided. On the other hand, disciplinary proceedings were initiated against him. The tribunal accepted the respondent's appeal on merit, with the end result of absence be considered as earned leave. Here again, we find the decision tribunal just and proper in the circumstances of the case, and therefore the patient dismissed and leave refused. उन्होंने डिपार्टमेंट की अपील थी कि जो उसको पे नहीं मिलनी चाहिए, तो उन्होंने उसकी यहाँ पे डिसमिस कर दी. दोनों में उन्होंने बैक बेनिफिट्स अलाउ कर दिए हैं. बाकी ऊपर वाले तमाम में अनाउंस हुई 28 अप्रैल 2021 को. अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है. रिपोर्ट अभी होगी और ये नीचे जजेस के साइन होते हैं. मंसूर मलिक और मंसूरी शाह साहब इसमें बैठे हुए थे. तो इसमें ये सर्विस लॉ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसका टाइटल पेज ये है, इसमें देख सकते हैं. अभी रिपोर्ट भी नहीं हुई है कहीं पे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है. तो ये बड़ी अच्छी आप समझते हैं कि ये एक आपको करोड़ों की जजमेंट मिल गई है, जिसमें मंजूर अहमद मलिक साहब, मंसूरी शाह साहब की जो है ये जजमेंट है. सर्विस लॉ के बारे में है. सर्विस लॉ की इसने तमाम चीज़ें, बैक बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिविल एम्प्लॉइज़ के लिए, और उसकी रीइंस्टेटमेंट इनटू सर्विस है. फिर कुछ डिपार्टमेंटल अपील्स हैं, वो कुछ साथ में जो है प्राइवेट अपील्स हैं. हम साथ में ये भी देखा है कि सर्विस ट्राइब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से उन्होंने पहले जनरलाइज्ड ऑर्डर लिखा है, फिर उन्होंने इंडिविजुअली एक एक जो CP है उसको उन्होंने जो है उसको फाइनलिटी दी है. बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है अगर आप डेफिनेशंस वगैरह के हिसाब से अगर आप सर्विस लॉ का काम भी करते हैं. थैंक यू जी.